नॉर्थ की यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी 19वीं शताब्दी में जब बनाई गई तो उसके लिए जो रकम दी गई, जो आज की रकम के मुताबिक 600 करोड़ के करीब है, वो रकम दी गई डोगरा महाराजा द्वारा। कौन थे पूरे वो डोगरा महाराजा? जरूर अंत तक जुड़े रहें और अपनी वैल्यूबल राय रखें। सर उल्टा सर क्योंकि डोगरा हिस्ट्री बहुत सारी जो है कि इसको लिखते हैं टायरानिकल डोगरा रेजिम, कि ये लिखते हैं वो लिखते हैं। इन्होंने बताया कि डोगरा के लिए कश्मीर में कितनी उन्नति की, किस क्षेत्र में उन्नति की, स्वास्थ्य में की, शिक्षा में की, और कई क्षेत्रों में समाज सुधार में की। इन्होंने कश्मीरी पंडित होते हुए इन्होंने पूरी इसकी रिसर्च करके उसको बुलाया, मैंने खास तौर पे दिल्ली से आज के लेक्चर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू, मैं पंकज खजूरिया। आपने अक्सर सुना होगा कि जम्मू कश्मीर को रियासत को बनाने में डोगरास का अहम भूमिका रही। इनफैक्ट डोगरास द्वारा ही पूरी स्टेट को बनाया गया। चाहे मैं जम्मू, बल्तिस्तान, गिलगित, लद्दाख, कश्मीर की बात करूं, 5 अलग अलग संभागों को डोगरास ने एकत्रित किया और यहाँ की नॉर्दर्न बाउंड्रीज को मजबूत किया। लेकिन आपने हार्डली सुना होगा कि डोगरा जो है उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काफी ज्यादा थी, यानी कि बौद्धिक जो ज्ञान था उसके लिए एक अहम योगदान रहा जम्मू कश्मीर में। हालांकि ये चर्चा का विषय आज तक नहीं रहा, लेकिन कल जब इस किताब का विमोचन हुआ जिसका शीर्षक था कश्मीर अंडर द डोगरा, जिसको डॉक्टर सोमनाथ पंडिता, डॉक्टर SN पंडिता द्वारा लिखा गया, और कल महाराजा गुलाब सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से जब महाराजा गुलाब सिंह जो पहले महाराजा रहे, डोगरा महाराजा, उनके जन्म वार्षिक जो जन्म दिवस था वो मनाया जा रहा था, वहां पे इस किताब का विमोचन हुआ। क्या पूरी बातचीत रही आपके साथ जरूर साझा करूंगा। लेकिन क्या आपको पता था कि पूरे भारतवर्ष में मात्र 4 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी किसी समय में 18वीं 19वीं शताब्दी में, जिसमें बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, जो आज की डेट में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता हैं। वहीं नॉर्थ में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, और नॉर्थ की यूनिवर्सिटी जो है वो लाहौर में बनी, और उस यूनिवर्सिटी को खड़ा करने के लिए जिसने पैसे दिए, जिसने अपने खजाने से वो रकम दी, वो कोई और नहीं, महाराजा गुलाब सिंह जी के बेटे महाराजा रणवीर सिंह थे, जो आज की डेट में लगभग 600 करोड़ की रकम बनती है। क्या कुछ पूरी डिटेल है, आइए सुने। और वहीं इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पंडिता, जिनकी आज एक किताब, बहुत बड़ी किताब मैं कहूंगा, जिससे कल जिक्र जो है महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी द्वारा किया गया था कि कश्मीर अंडर द डोगरास। क्या कुछ कहते हैं। हालांकि इन्होंने जब अंदर एड्रेस कर रहे थे तो काफी चीजें गिनाई। सर, आपने कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर लिगेसी जो हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में सर किसी में भी आप जो आपको अच्छा लगे। You see, normally history is layered and it's stratified. History of Dogras, unfortunately, has been marginalized and it has gone into the footnotes of Indian historiography. The contributions Dogras made to the India is phenomenally rich. Generally speaking, Dogras are remembered for 2 things in Indian history. It starts with Maharaja Gulab Singh having purchased it for 75 lakhs. Kashmir, and it ends with the saying that Maharaja Hari Singh delayed the accession and we got all the trouble and what followed ever since. As if nothing happened in 101 years of their rule with 4 Maharajas. Political history has been often played with, underplayed, but unfortunately their intellectual contributions to the society have never been brought into the mainstream of historiography of this country. Now when I say what is intellectual history, you have mentioned Lahore University, you have mentioned Pratap Museum, you said that it has started by I'll come to that. You see, 3 most modern pillars to modernize any society anywhere in the world
is education, healthcare. And after these two, what remains is to show your greatness. And most of the human greatness comes through learning and scholarship. Very few in this country know that of the four main major universities that were established in India, in 1857, three universities were established: Bombay, Calcutta, and Madras. There was no university in north of India, in northern India. In 1862, it was decided that North India should also get, and people will have a lot of benefits. The university was established, but the point came where from the money will come to build the infrastructure of the university. The only Maharaja and the first Maharaja out of 500 and odd Maharajas in this country was Maharaja Ranbir Singh, who donated 62,500 rupees as early as 1862. 62,500 rupees. 62,500. In today's economy, it would be safe to say something to the tune of 625 crores. Okay, so what were the major reforms in Kashmir under Dogras in 2 or 3 sentences? The first major reform was land settlement. The second was widow remarriage. Third was prohibition of child marriage, anti-smoking act, and most importantly, they patronize the Western missionaries for healthcare and education. In Kashmir. But sir, apart from this, Atish Chinar has mentioned something different, and then this particular, it is in the parallel of this particular. Unfortunately, Atish Chinar is a political document. But it has mentioned the role of Dogras in Kashmir particularly. That is purely because of the hatred Sheikh Abdullah held for the Dogras. Dogra Raj, Shakshi Raj, and throw them out. It was all politically motivated. Somebody should have asked Sheikh Abdullah, if you read and then went for your post-graduation to Aligarh University, where from did you graduate? He graduated from the college that was established by the Dogras, SP College. So where from did he get that education to raise the banner against the Dogras? How did he live, or his forefathers physically live? They did not die of smallpox, they did not die of tuberculosis, they did not die of cholera. They got some modern medical facilities. Sheikh Abdullah ought to have been asked, if you are today talking against the Dogras, how do you do that if you hadn't survived, if your ancestors hadn't survived? So your book definitely will become the part of attraction in Kashmir Valley also, because you have mentioned. I will defend every line of it with the documentary evidence. I have quoted hundreds of letters. But the best part is this: you have mentioned something which is factually and reality has maintained in the Kashmir Valley. Absolutely, you see, much of the progress during the Dogra rule happened in Kashmir. It did not happen in Jammu. Another aspect, I have discussed numeral system of Kashmiri language which was developed during their rule. It was used in their revenue systems. If they were parochial, they would have never encouraged this study and use it in their administrative system, in their revenue system. There are stamps which figure Kashmiri numeral system. Kashmiri was not their tongue, so they were not parochial. They encouraged that it should get developed, and they used it in their revenue system. So this is a great contribution of Dogras to the Kashmiri language when the language is not theirs. Okay, sir. I hope your book will become an eye opener and a light thrower for them. Eye opener. The idea is, at least we know those aspects of the Dogra history which has not been discussed, which has not come to light so far. If people appreciate something out of it, I'll feel rewarded. Okay, sir. Thank you very much to write such a wonderful book, and especially which has not been written and was not the part of the discussion till date. Absolutely, to that extent, the book bears some new insights. बहरहाल कश्मीर अंडर द डोगरा ये जो किताब है
किताबें बड़ी सारी लिखी गई हैं। राधा कुमार की भी एक किताब आई थी कश्मीर पैराडाइज, जिसमें डोगरास को हाईलाइट किया गया, रोल को अप्रिशिएट किया गया, लेकिन चर्चा में बड़ी कम रही। आतिश चिनार में डोगरास को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया, पंडिता द्वारा साफ कहा गया, डॉक्टर पंडिता द्वारा, कि वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड थी। लेकिन कश्मीर में हेल्थ केयर किसी ने ठीक किया, कश्मीर में इकॉनमी किसी ने ठीक की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ठीक किया, एजुकेशन ठीक किया, म्यूजियम का कंसेप्ट अगर अक्रॉस द इंडिया कोई लाया तो वो डोगरास से, डोगरास राज परिवार, डोगरा महाराजा से। इस सारी डिटेल को आप कैसे देखते हैं, और क्या ये किताब अभी एक नया टर्निंग पॉइंट लेगी जम्मू कश्मीर की सियासत में? अपनी वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहिए ग्रेट जम्मू। कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।